Hello dear learners, today's video is going to be an interesting video because it's about a family conversation. So try to watch the video till the end. You will get to learn a lot from this video and it will help you to speak flawless English in your day-to-day conversation. So without any delay, let's start the video. Well, here is today's conversation. Riku tu utinu, eporjonto soichu, asi 9টা bajilani. It's a normal family conversation. And how to translate this sentence in English? Let's know. So, इस sentence को हमें English रे केमते translate करिबा. First हमें translate करिबा रिकु तू उठिनु. एपर्यंत सोइछु. Okay? तो तू उठिनु बा तू उठिनाहु. It's a negative sentence. And एठी गोटे word use हेछि कि एपर्यंत बा एजाय. तार English कोन हेजबो? रिकु you still haven't woken up. Or you can say you haven't woken up yet. Okay. ताले एटे में को tense use कले ना present perfect tense use कले जहार structure has or have plus V3 and एटे में wake रो third form use कले waken. तापर sentence रो लेकि एपर्यंत सोइछु you are still sleeping एटे में present continuous tense use कले एपर्यंत बा एजे में हमें word use कले still you are still sleeping एपर्यंत सोइछु आसी 9টা बाजिलानी it's already 9 o'clock or it is already 9 o'clock आसी 9টা बाजिलानी तो आसी 9ଟା बाजिलानी एथिरे ए सेंटेंस रे आपन को कोनसी कोटा सब्जेक्ट जणा पडु नथबो तो एम्ति टाइप रो सेंटेंसेस रे हमें it as a subject यूज करबे जेमते एठी हमें यूज करले it is or you can say it's already 9 o'clock आसी 9ଟା बाजिलानी नेक्स्ट सेंटेंस केतबळे तू उठिबु बा केतबळे उठिबु तू When will you wake up? When will you wake up? When you wake up. Next sentence, जल्दी उठे एबे बा एबे जल्दी उठे एठी हमें कहि परबा wake up now. Wake up now. Next sentence हमें देखिबा हां बाबा मु उठुछे. हां बाबा मु उठुछी. Yes dad or you can say yes dad, yes papa or yes father, whatever you can say. Okay? Yes dad, I'm getting up. मु उठुचे I'm getting up. उठिबा means get up. It's a phrasal verb. Next sentence तू आजिकली बहुत अलसुआ हे गलनु खाली सोचु. आजिकली these days you have become very lazy. अलसुआ हे गलनु को टेंस रे अछि ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जोथरा हमें हाफ प्लस v3 यूज कले become रो थर्ड फॉर्म सेम become. These days you have become very lazy. आजकल तू बहुत अलसुआ हे गलनु खाली सोचु. You are always lying down. Lay down means सोई रहबा. You are always lying down. खाली सोचु. Next sentence राति रे लेट जाए मोबाइल देखुछु आउ दिन रे लेट जाए सोई रहउछु. राति रे लेट जाए मोबाइल देखुछु. You watch your mobile till late at night. You watch your mobile till at night. एठी हमें को टेंस यूज करछे ना सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करछे काहे की यूज करछे ना एटा रेगुलर एक्शन विषय कहा जाउछे मींस दीज डेज. स्टार्टिंग में हमर गोटे वर्ड थला ना कि आजिकल तो बहुत अलसुआ हे गलनु खाली सोई रहउछु. राति रे लेट जाए मोबाइल देखुछु आउ दिन रे लेट जाए सोई रहउछु. एठी वर्ड्स रहिछि कि देखुछु सोई रहउछु सेतलागी हमें कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करबानी. एठी रेगुलर एक्शन कथा कहा जाउछि कि आजिकली मींस रेगुलर रिपीटेड एक्शन कथा कहा जाउछि सेतलागी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करबा बा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करबा. You watch your mobile till late at night and दिन रे लेट जाए सोई रहउछु. Sleep till late during the day. Sleep till late during the day. आउ दिन रे लेट जाए सोई रहउछु. तो एठी दुईटा सेंटेंसेस रा हमें यूज करले सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस ए सब बहुत खराब अभ्यास. These are very bad habits. These are very bad habits. तोरो आजि कॉलेज नाही की. Don't you have college today? Or you can say do you not have college today? एठी हमें तोरो नाही don't you have. मोरो नाही हमका एमती कहछबो कि हम कहबा कि I don't have. मोरो नाही I don't have. तोरो नाही की don't you have college today? हाँ बाबा आज मोरो कॉलेज अछि. Yes dad or yes papa I have college today. मोरो अछि I have college today. Yes papa I have college today. Next sentence तेबे केतबळे जेबो एजाय तो उठी नहु.
Then when will you go? एजाए तो उठी ना हूँ. You haven't even gotten up yet. एजाए तो उठी ना हूँ. एठी हमें को टेंस यूज कले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कले एंड नेगेटिव सेंटेंस अछि you haven't even got up yet. गेट रो में थर्ड फॉर्म gotten यूज कर परबा नहले get got यूज कर परबा. क्लियर? You haven't even gotten up yet. तू एजाए तो उठी ना हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस हम पापा एई तो उठलियो. बस जाउची रेडी हेबी. Yes dad, I've just gotten up. एई तो उठलियो. I've just gotten up. बस जाउची रेडी हेबी. I'm going to get ready now. एई सेंटेंस को हमें गोइंग टू हमें यूज कले मीन्स एटा नियरर फ्यूचर प्लान विषय कहा जाउची बा नियरर फ्यूचर एक्शन विषय कहा जाउची सेत लागि हमें यूज कले गोइंग टू प्लस V1 गोइंग टू गेट. ओके आई एम गोइंग टू गेट रेडी नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस ठीक अच्छे शीघ्र जाओ और शीघ्र रेडी हो. ओके गो क्विकली शीघ्र जाओ गो क्विकली और शीघ्र रेडी हो एंड गेट रेडी फास्ट. ओके नेक्स्ट सेंटेंस बापा तुम्हें मार्केट आड़ को जीव कि. डैड विल यू गो टुवर्ड्स द मार्केट. विल यू गो टुवर्ड्स द मार्केट. मार्केट आड़ को टुवर्ड्स द मार्केट. विल यू गो टुवर्ड्स द मार्केट. मोते टिके कॉलेज रे छाड़ी देई थांदो. प्लीज ड्रॉप मी एट कॉलेज. प्लीज ड्रॉप मी एट कॉलेज. ओके नेक्स्ट सेंटेंस ना मोर आज अन्य आड़ को जीवार अछि. तू आज तो सांग सह पळै जा. ना मोर आज अन्य आड़ को जीवार अछि. नो आई हैव टू गो समवेयर एल्स टुडे. अन्य आड़ को बा आउ कुआडे समवेयर एल्स. नो आई हैव टू गो समवेयर एल्स टुडे. यू गो विथ योर फ्रेंड. You go with your friend today. Next sentence and the last sentence. ठीक अच्छे बाबा मु आज रवि सह कॉलेज पळेबी. Okay dad, I'll go to college with Ravi today. I will go to college with Ravi today. Tense कोन रहछि? Present simple tense. सेतले हम यूज कले will.